Welcome back, learners, to very own channel Skills, Better Life. I hope you all are doing very, very well and the weather is treating you well. So today we are going to talk about strategies for improving your writing in all three spheres of writing, that is creative writing, academic writing and professional writing. So let us start with creative writing. जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि क्रिएटिव राइटिंग ऐसी कोई राइटिंग जिसमें आप अपना क्रिएटिविटी, अपना एक्सप्रेशंस, अपने थॉट्स जाहिर करना चाहते हैं थ्रू पोएट्री या स्टोरी या कोई भी आर्टिकल के थ्रू. सो क्रिएटिव राइटिंग में हमें सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है वो है लैंग्वेज पर. अब क्योंकि लैंग्वेज की बात हो रही है तो लैंग्वेज में वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपकी लैंग्वेज को इनरिच करती है और आपकी राइटिंग में और ज़्यादा creative juices लाती है. So vocabulary has to be rich in your creative writing. Number two, you have to do a little bit of research on what sort of works have been done before you were writing. So आपको थोड़ा सा एक read others in your interest area before you start writing your own piece. सो रीडिंग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिएटिव राइटिंग में भी ज़रूरी है, नॉट जस्ट एकेडमिक राइटिंग में ही रीडिंग ज़रूरी है. क्रिएटिव राइटिंग के लिए भी अगर आपको एक अच्छा क्रिएटिव राइटर बनना है, इफ़ यू वांट टू बी अ गुड नॉवेलिस्ट और अ गुड पोएट, यू हैव टू फर्स्ट रीड other works of creativity to enrich your own creativity. Number 3, you have to follow a theme throughout your creative writing. For example, आपने कोई एक प्लॉट एक प्लॉट डिसाइड किया जिस पर आपको स्टोरी लिखनी है. सो इन द एंटायर स्टोरी यू हैव टू कीप दैट थीम, दैट प्लॉट इन माइंड. देयर हैज़ टू बी अ थीमेटिक कनेक्शन इन योर एंटायर पीस ऑफ वर्क. अगर थीम नहीं होगी तो ऑडियंस आपसे कनेक्ट नहीं कर पाएगी. Fourth is that you have to mind your grammar. Grammar is an integral part of written language. अगर आपका ग्रामर ख़राब है तो स्पोकन में तो चल जाता है if you make minor grammatical errors. पर जब आप लिखते हैं ना तो because people who are reading also have a lot of time to ponder over your writing, उनको वक्त होता है उस टाइम उनके पास, therefore वो grammatical errors को फ़ौरन से पकड़ लेते हैं और राइटर का टैक्ट जो है वो वहीं पर कम हो जाता है, कम दिखने लगता है कि if the writer is making grammatical errors, that means he's not good in language and therefore his imagination goes secondary and primarily उसकी language पर ही question उठ जाता है. So you have to mind your grammar also. And then Number 5, your creative writing has to be a piece of imagination. It has to be unique, it has to be out of the box, something which really connects with the audience, which attracts the audience and which brings your audience back to you and keep asking for more and more. The creative writing has to be that good, has to be that interesting for the audience. So ये 5 points थे creative writing के. Vocabulary, read other works of creativity, follow a theme, mind your grammar and be imaginative and unique in your writing. Okay, तो अब हम आते हैं एकेडमिक राइटिंग की तरफ. तो इसमें ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ख्याल में रखनी है? अगर हम 5 मेजर पॉइंट्स उठाएं तो नंबर 1 इज़ प्रेजेंटेशन. एकेडमिक राइटिंग में प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हाउ हैव यू प्रेजेंटेड योर वर्क. Not verbal presentation, but the formatting of your work, how the formatting has been done, how nicely and thoughtfully you have presented your work for the reader to make it more engaging and to make it more sensible for the reader of academic interest. सेकेंडली जो हमें ध्यान रखना है वो है रिसर्च बेस्ड रेफरेंसेस का. हमें अपने एकेडमिक राइटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस को लाना पड़ता है टू मेक इट मोर प्रैक्टिकल एंड मोर ऑब्जेक्टिव. हमसे पहले जो रिसर्चेस हुई हैं या जिसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं, जो भी टॉपिक है, अगर ये डिजिटेशन या थीसिस की बात नहीं हो रही है, सिनॉप्सिस की बात नहीं हो रही है, अगर हम बहुत ही जनरल वे में कोई एकेडमिक आर्टिकल लिख रहे हैं या कोई ऐसी रिपोर्ट लिख रहे हैं, तो हमें उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिगर्स, डायग्राम्स, स्टैटिस्टिक्स, ये सारे फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें हमें देनी है, विदाउट विच
हमारा जो एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी उसकी नहीं होती है. ओके, नंबर 3, वी हैव टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट ऑफ आवर एकेडमिक राइटिंग. एकेडमिक राइटिंग के हर एक एकेडमिक राइटिंग का एक वर्ड लिमिट होता है, तो उस वर्ड लिमिट को हमें ध्यान में रखते हुए ही अपनी एकेडमिक राइटिंग करनी है. इट्स नॉट अनदर पीस ऑफ स्टोरी जो आप लिख रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग में. इट इज़ वेरी फॉर्मल, इट इज़ वेरी वेल डिजाइंड, देयरफॉर एकेडमिक राइटिंग हैज़ टू स्टिक टू द वर्ड लिमिट. ओके, academic writing is also very analytical. What you have to do is, आपको खाली जो रिसर्च हुआ है उसको एज इट इज़ नहीं प्रेजेंट करना है, आपको उसको एनालाइज करते हुए प्रेजेंट करना है. और अगर आप प्रेजेंट कंडीशन के बारे में भी उसमें डाल रहे हैं अपने एकेडमिक राइटिंग में, तो आपको उसको भी बहुत ही एनालिटिकल वे में डालना है, बहुत ही एनालिटिकल वे में चीज़ों को डिस्क्राइब करना है, लिखना है. You have to be very critical and analytical. So these were the major points that you have to keep in mind while you're writing any academic piece. That is, number 1, presentation or formatting. Number 2, referential, research based. Number 3, word limit you have to be sure about. And 4th is analytical, and 5th is it has to be persuasive or critical. Okay, now let's come towards professional writing. In professional writing, the first and foremost thing that you have to keep in mind is you should be very brief and crisp, to the point. In professional sphere, nobody has a lot of time to give to your writing. Everyone is busy with their own work, and they just have to, उनको खाली उसमें से एक basic information चाहिए आपके professional writing के piece में से. Therefore, it has to be very crisp and precise. Number 2, it should be very easy to understand, क्योंकि प्रोफेशनल स्फीयर में ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में आप बहुत कंफर्टेबल हैं, हो सकता है कि जो आपका कलीग है वो उस लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर वर्किंग इन अ मल्टीकल्चरल multinational company, therefore if you are very good in French, probably the other person is good in Spanish or German. So you have to keep in mind कि वो जो लैंग्वेज आप यूज़ करें, it has to be easy to understand. Thirdly, your professional piece of writing has to be, just like what I mentioned earlier, has to be informational. It has to be information rich, not word rich or adjective rich or language rich. It has to be information rich. And last but not the least, professional writing should invite feedback. आजकल अगर आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल वे में अगर आप फीडबैक नहीं मांग रहे हैं अपनी राइटिंग के थ्रू या अपने स्पोकन प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो आपका द पर्पस ऑफ योर प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन और योर प्रोफेशनल रिपोर्ट्स इज़ नॉट catered to. आपको अपने क्लाइंट से या अपने सुपीरियर्स से या अपने कलीग्स से फीडबैक की बहुत ज़रूरत है. So these are the 4 major points that you have to keep in mind in professional writing. Number 1, it has to be crisp and precise. Number 2, it should be easy to understand. Number 3, it has to be informational, more of information, more of figures and facts that you have to talk about. And number 4, it should invite feedback. So ये 5 चीज़ें अगर आप याद रखेंगे अपने हर एक तरह की राइटिंग में, क्रिएटिव राइटिंग में भी, एकेडमिक राइटिंग में भी और प्रोफेशनल राइटिंग में भी, ये जो मैंने आपको बताई हैं सारे पॉइंट्स, तो आपकी ये तीनों तरह की राइटिंग जो आप डे टू डे डेली वे में जो आप यूज़ करते हैं, ये आपकी राइटिंग्स बहुत एनरिचिंग और बहुत ही पर्पसफुल हो जाएंगी. थैंक यू वेरी मच. कीप फॉलोइंग मी.